सर ये गलत ऑर्डर सर, ठीक है, इसको जाके चैलेंज करिएगा। चैलेंज सर, ये उमा देवी के सर जजमेंट इसमें कवर ही नहीं होता सर। डायरेक्शन देते सर मेरे केस कोर्ट में ना लगाए जाए सर। नहीं, ऐसा नहीं था डायरेक्शन। नहीं सर, इस तरीके से सर अगर केस को सुनेंगे सर, क्या मतलब सर, न्याय के लिए सर यहाँ पे आते हैं, इस तरीके से सर ऑर्डर लेने के लिए नहीं है सर। खारिज भी करिए, सबका रीजेंट ऑर्डर होने चाहिए सर। मेरे कोई बहस कंसीडर नहीं की जाती सर, न्याय नहीं मिलता सर यहाँ को सर। हाँ ठीक है, न्याय नहीं मिलता, इसलिए सर डायरेक्शन मेरे हमारे डायरेक्शन नहीं दूंगा, हमारे केस यहाँ पे ना आप लिख के दे दीजिए चीफ जस्टिस साहब नहीं को। करना चाहते आप वहाँ सर, कम से कम जो मैंने दस्तावेज लगाया सर उनको तो कंसीडर करके सर ऑर्डर लिखा है, भले ही आपने खारिज किया है पर कम से कम सर जो मैंने डॉक्यूमेंट लगाए सर उनको। विकास मिश्रा सर दिस इज नॉट द वे, व्हाटएवर यू आर। सर जो मेरा आर्गुमेंट है सर उसको कंसीडर नहीं किया जा रहा सर, जो मैंने डॉक्यूमेंट लगाया सर उनको कंसीडर। कौन से आर्गुमेंट को आपके कंसीडर नहीं किया गया है सर? मैंने सर जो रूल्स है सर, जो 2011 का ऑर्डर सर, वो बैकडोर, कौन सा रूल्स लगाया? चलिए बैकडोर एंट्री नहीं सर। एक मिनट रुकिएगा, कौन सा रूल? Lordship, in this petition, I am challenging annexure P1, by which the respondents have advertised the post of ANM. The petitioners, both petitioners, are working as an AM on contractual basis, Lordship, since 2008. लास्ट डेट निकल गई, आज क्या चैलेंज कर रहे हैं आप? सर मैं उसके लिए नहीं कर रहा हूँ, फॉर्म भरने के लिए नहीं सर। इन द year of 2011, Your Lordship, the respondents have issued a order, Your Lordship. May kindly see that order is at annexure P3, page number 30. In that order, Your Lordship, the respondent number 2 has directed to CMHO to regularize the service of, Your Lordship. The name of the ANM has been mentioned in that list, Your Lordship. The name of petitioner number 1 is mentioned at serial number 26, and the name of petitioner number 2 mentioned at serial number 43, Your Lordship. And Your Lordship, on the basis of this order, Your Lordship, no action has been taken by Your Lordship, the authority. Then the petitioners have approached to this honorable court by filing a writ petition number 16978/2012, Your Lordship. That has been disposed of by order dated 22/6/2018, directing the respondents to decide the case of the petitioner on the basis of circulars and other orders, Lordship. Nothing has been done. Then the petitioner have submitted the representation, Lordship, and in that petition, Lordship, the state has also filed the return, and in return they have specifically admitted that there is no vacant post. If in the future the vacancy will come, the claim of the petitioner will be considered, Lordship. Now, Lordship, there is 400. पद ही नहीं थे तो कैसे हो जाएंगे आप? नहीं सर मैं वही बोल रहा हूँ सर, वो पढ़ चुका हूँ सर, उसमें पद नहीं है। और रिप्लाई में सर उन्होंने ये भी बोला था कि जब भी पद रिक्त होंगे हम आपका कंसीडर करेंगे। सर अब ये एडवर्टीजमेंट जो आया सर, आपका तो एक और फैक्ट है, आप व्यापम के माध्यम से फेल हो चुके हैं। हाँ वो सर अलग बात है। वो अलग ये नियमितीकरण सर वो तो डायरेक्ट एग्जाम होता है सर, जो व्यापम वाला होता है सर, वही अभी फिर से इन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाला है। उसमें सर एसटी की 412 पोस्ट एडवर्टाइज की गई है। के लिए कौन सी पोस्ट है? कैडर क्या है इसका? हाँ सर ये है ना, पेज नंबर सर आप देख लें इसको, पेज नंबर 21 देख लें सर। पेज 21, यस। पोस्ट कोड 34 में सर ये अनुसूचित जनजाति के लिए सर 400 टोटल 478 पोस्ट है सर। सर ये पोस्ट केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए? हाँ महिला, हाँ सर ये महिलाओं के लिए होता है सर ये एएनएम। उसमें संविदा कर्मी की भी तो 96 है। 96 है सर संविदा कर्मी। अरे भाई टोटल 96 है संविदा कर्मियों के लिए। हाँ संविदा कर्मी के लिए 96 है। तो संविदा कर्मी है सर, वो ये संविदा कर्मी के रूप में कार्य करेंगे, जो नियुक्ति होगी इनकी, ये उनके लिए सर 96, इनको मिला के सर टोटल 478 पद है सर। बताइए भाई। वो संविदा में जो कर्मी भूतपूर्व सैनिक जो रहे उनके लिए नील है, जो संविदा कर्मी जो काम कर रहे हैं उनके लिए 96। हाँ वही तो हम भी कह रहे हैं, इनको पार्टिसिपेट करना था ना। पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो होगा, वही तो हमने भी कहा सर। पार्टिसिपेट चूंकि हमारा सर ये जो 2011 का 11 का तो वहां जाके कंटेम्प्ट लगाइए, आप जाकर कंटेम्प्ट लगाइए, अपना कंटेम्प्ट में जाकर लगाइए। नहीं सर मैं इसीलिए सर मैं ये पिटीशन जो मैंने सर फाइल की है सिर्फ इसीलिए फाइल की है सर, क्योंकि सर ये वैकेंसी निकली हुई है सर। तो सर इनका जो स्टैंड था सर, चूंकि पद खाली नहीं है सर, तो सर कम से कम अगर उस वक्त खाली नहीं था सर, अब तो खाली है सर। हाईकोर्ट का डायरेक्शन पढ़ते हैं। हाँ सर पढ़िएगा, पेज 33 पे पढ़िएगा। In view reach to a consensus, it is agreed that if petitioner prefers a comprehensive fresh representation seeking regularization in the light of recent circular 7/10/16 से तो ये पोस्ट वैसे भी नहीं भरी जानी है, आपका पूरा क्लेम ही मिसप्लेस्ड है। 7/10/16 जो है वो सिर्फ
रेगुलर वो सर विनियमितीकरण के लिए सर, वो तो विनियमितीकरण के लिए विनियमितीकरण के लिए, नियमितीकरण के लिए है ही नहीं सर। नहीं, फिर ये ऑर्डर ही आपके पक्ष में नहीं है। जो ऑर्डर आप हमें दिखा रहे हैं वो ऑर्डर ही आपके विरुद्ध है। सर इन्होंने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करने के लिए सर। नहीं, रेगुलराइजेशन इन द लाइट ऑफ इट्स क्वालिफाइड ऑर्डर, you seek review of this order. I don't know where is your remedy, but not here. But your lordship, my contention is that your lordship, when in the जो P3 है सर, ये रिस्पोंडेंट नहीं सर ये इश्यू किया है। क्या होगा सर इसी के बेस में सर हम अपना हमारा पूरा क्लेम सर जो पिटीशन हमने फाइल की थी, इसके परिप्रेक्ष्य में आपने फिर पिटीशन लगाई P4 में ऑर्डर वो रिप्रेजेंटेशन भी सर अथॉरिटी इन लाइट ऑफ 7/10/2016 हमारा जो रिप्रेजेंटेशन हमने दिया सर, अथॉरिटी ने उसको फॉरवर्ड किया है सर। स्टेटमेंट देखिए पेज नंबर 40 साहब, उसको फॉरवर्ड किया होगा। दैट विल नॉट क्रिएट एनी राइट इन योर फेवर। इशू इज वेरी सिंपल, दैट हाई कोर्ट हैज पास्ड एन ऑर्डर saying that your representation is to be decided in terms of the policy dated 7/10/2016. 7/10/2016 does not create any right in your favor to regular appointment. And therefore your authorities may do anything that will not create any right to interfere in the advertisement. You may participate, you should have participated, you should have paid the... But my stand is that, your lordship, when the your stand is that, then please file contempt petition that order passed by the writ court on 22/1/2018 is not being... कंटेम्प्ट की कार्रवाई सर एक अलग चीज हो जाती है सर। मेरा यहाँ पे सर क्लेम ये है मैं दिखा देता हूँ, लिखिएगा। श्री विकास मिश्रा, learned counsel for the petitioner. This petition is filed by the petitioners being aggrieved of the advertisement issued by the Madhya Pradesh Employees Selection Board, Bhopal, for conducting an examination for recruitment to Group 5 posts of staff nurse, A&M, assistant veterinary field officers and equivalent posts through backlog. Full stop. Petitioners are members of ST category. Full stop. They were already working as A&M. Chief medical and health officers of the concerned districts to give benefit of regularization against the vacant posts of A&M in their districts. It was also directed that if posts fall vacant in future, then such person should be given benefit of the regularization. In this list, name of the petitioner Kumari Kalavati Chhata appears at serial number 26, whereas Shrimati Kamla Gotia at serial number 43. Petitioners are working on contract basis as A&M. Full stop. Therefore, they should have filled the form and should have participated in the selection process in as much as 96 posts are specifically reserved for regularization of contract A&Ms. But petitioner did not fill the form and now is claiming advantage from backdoor, having failed to avail the facility and participate in the selection process. They cannot seek regularization through a backdoor. Therefore, petition being devoid of merits deserves to be dismissed and is hereby dismissed. सर मेरे एक निवेदन सर, उसमें सर बैकडोर एंट्री सर जो आपने सर लिखा दिया है सर, ये तो हमारे अगेंस्ट आएगी, क्योंकि सर ये बैकडोर एंट्री नहीं है सर, ये सरकार के आदेश में काम कर रहे हैं सर। मैंने क्या लिखा है इसको पढ़िएगा, उसके बाद में प्लीज। आई एम नॉट सपोज्ड टू आंसर ऑल दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये इनके लिए सर अलग पॉलिसी है रेगुलाइजेशन की सर, उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई सर। उम्मत एबी का जजमेंट इसमें कवर ही नहीं होता सर। ठीक चलिए सर, इनकी पॉलिसी अलग है, उसके अकॉर्डिंग सर ये सबका नियमितीकरण हो चुका है ऑलरेडी सर। चलिए नेक्स्ट केस। सर कम से कम जो मैंने दस्तावेज लगाया सर उनको तो कंसीडर करके सर ऑर्डर लिखा है, भले ही आपने खारिज किया है, पर कम से कम सर जो मैंने डॉक्यूमेंट लगाए सर उनको। विकास मिश्रा, this is not the way. Whatever you are. सर जो मेरा आर्गुमेंट है सर उसको कंसीडर नहीं किया जा रहा सर, जो मैंने डॉक्यूमेंट लगाया सर उनको कंसीडर। कौन से आर्गुमेंट को आपके कंसीडर नहीं किया गया है? सर मैंने सर जो रूल्स है सर जो 2011 का ऑर्डर सर, वो बैकडोर। कौन सा रूल्स लगाया? चलिए बैकडोर एंट्री नहीं सर। एक मिनट रुकिएगा, कौन सा रूल लगाया आपने? 2011 बहस मत करिए, पहले रूल बताइए, कौन सा नियम लगाया आपने? सर 2011 का। कहाँ है 2011 का रूल बताइए सर। 2011 पढ़िए आप, ऑर्डर है, रूल पढ़िए आप।
सर 2011 का जो ऑर्डर है सर, नहीं सुनेंगे आपको, आपको जो करना चाहिए अपील में करिए। डायरेक्शन देते सर मेरे केस कोर्ट में ना लगाए जाए सर। नहीं ऐसा नहीं था नहीं डायरेक्शन सर, इस तरीके से सर अगर केस को सुनेंगे सर, क्या मतलब सर, न्याय के लिए सर यहाँ पे आते हैं, इस तरीके से सर ऑर्डर लेने के लिए नहीं है सर, खारिज भी करिए सर, रीजेंट ऑर्डर होने चाहिए सर, मेरे कोई बहस कंसीडर नहीं की जाती सर, न्याय नहीं मिलता सर यहाँ को सर। हाँ ठीक है, न्याय नहीं मिलता, इसलिए सर डायरेक्शन मेरे हमारे डायरेक्शन नहीं दूंगा, हमारे केस यहाँ पे ना आप लिख के दे दीजिए चीफ जस्टिस साहब नहीं को, करना चाहते सर। आप वहां लिख के दे दीजिए, आप लिख के दे दीजिएगा। आप क्या बहस करते हैं सब रिकॉर्ड हो रही है, आपको कितनी बहस आती है, कितनी करते हैं आप, सब लिखाया जाता है। नहीं सर, नहीं लिखा जाता ना सर। हाँ ठीक है, उसमें एक ही और लिखिएगा, सुन के जाइए। श्री विकास मिश्रा submits that case law laid down by Supreme Court in Uma Devi will not be applicable and case of the petitioners is required to be considered in terms of the rules of 2011. Full stop. He is requested to bring on, but to point out from the record that what are the provisions contained in the rules of 2011. Full stop. बताइए 2011 के रूल्स में क्या लिखा ऑर्डर है? सर बता रहा हूँ, जो ऑर्डर सर इसमें ऑर्डर है, नहीं, रूल्स आपने वर्ड यूज किया है, नियमितीकरण का सर जो ऑर्डर हुआ सर 2011 में, रूल्स बताइए। वो अकॉर्डिंग सर मैं देख लीजिए सर 2011 का जो ऑर्डर है सर, इसमें सर सबका नियमितीकरण हुआ सर, ये हुआ होगा, लिखिए। सभी लोगों का हुआ सर, हमारा भी हुआ सर। He could not point out any rules in this behalf. Full stop. Regularization is to be made. रिप्लाई बुलाना चाहिए सर, Regularization is to be made in terms of the vacancies. Full stop. CMO has categorically mentioned that no posts for ST category were available for regularization of the petitioners. Full stop. This aspect has not been challenged by the petitioner. Full stop. In fact, petitioner has not challenged the order dated 14/3/21/3/2018 passed by the CMO, which is part of the return filed in the earlier writ petition. number डाल लीजिएगा, जिसमें कौन सा आपका ऑर्डर है उसका नंबर डाल लीजिएगा, WP नंबर इतना इतना। Full stop. Once it has come on record that posts were not available, then rehearse the vacancy position. Petitioner could not have claimed regularization. Full stop. Law in this regard is laid down in case of Uma Devi, and law laid down by Supreme Court is binding on all the subordinate, all the high courts and the subordinate courts. Therefore, the submission of Shri Vikas Mishra that law laid down by Supreme Court in Uma Devi is not applicable to the fact is contrary to the provisions contained in Article 141 and 142 of the Constitution, which makes it obligatory on the High Court to accept the law laid down by Supreme Court and apply it in its letter and spirit. Next, as far as it's section Article 141 and 142, 141. Next, as far as plea of non-regularization is and non-enforcement of orders of the coordinate bench is concerned, petitioner's remedy is elsewhere. Full stop. It is clarified that coordinate bench had directed for consideration of petitioner's representation in terms of GAD circular dated 7/10/2016, and that circular, as discussed above, does not deal with regularization but only regulating the service conditions of daily wages. Full stop. Despite this, learned counsel is using loose language in the court, which is unbecoming of a officer of the court, without taking further cognizance of his misconduct, petition, the original order is maintained. चलिए